Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about vaccines, which is a very important topic, in biology. So before proceeding to the video, I just want to request you all to please do like, comment, share, and subscribe to my channel. So let's get started. So what are vaccines? First, we are going to study about what are vaccines in general. So an individual might be exposed to an antigen to induce formation of antibodies, which is a type of immunity known as artificial active immunity. कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जब भी कोई पैथोजन इन्फेक्ट करता है, कोई एंटीजन जब इन्फेक्ट करता है कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो बॉडी जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जनरेट करती है अपने आप. दिस इज द mechanism of how antigen antibody interaction occurs in the body. तो वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन्स आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है जहां पर एंटीजन का वीकेंड फॉर्म या एंटीजन का इनएक्टिवेटेड फॉर्म एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उससे, ताकि जो बॉडी है वो एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करे, ताकि जब वो एंटीजन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करे तो वो कुछ उसका इफेक्ट ना हो. So vaccines are biologically prepared products that provide active acquired immunity to specific infectious diseases. Active acquired immunity as in it is active in nature for sure. Acquired as in you acquire it after birth. It is not genetic. You acquire it after birth. So it is acquired immunity. And specific infectious diseases जो हैं उनके लिए vaccines दिए जाते हैं. they stimulate the immune system to recognize and combat pathogens. ये क्या करते हैं, जो मैंने आपको mechanism बताया, that they stimulating the immune system to recognize the pathogen and to combat the pathogen, so that the body can generate the immunity, and when the actual pathogen infects the body will have no impact on itself. Okay, so vaccines consist of antigens derived from pathogens. It can be live यानी कि एक्टिव फॉर्म हो सकता है एक पर्टिकुलर एंटीजन का, इनएक्टिवेटेड फॉर्म हो सकता है, और कंपोनेंट्स यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट या कोई पर्टिकुलर जीन हम इंट्रोड्यूस लाइक जीन को हम एक वैक्सीन में इंट्रोड्यूस करके दे सकते हैं, जहां जो पर्टिकुलर पार्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए इनफ हो. It is a very important tool in preventive medicine and public health. Okay. This was about vaccine. Vaccine is also known as immunogen. वैक्सीन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का पूरा प्रोसेस होता है उसे इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. इम्यूनाइजेशन को वैक्सीनेशन भी बोला जाता है. वैक्सीन जो टर्म है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड vaccinus, जिसका मतलब होता है cows. It has a history because the first vaccine which was introduced was from the cow, so it has the whole story to it. Now the vaccines can be defined as a non-toxic or non-virulent preparation of antigenic material which are used to induce long-term humoral as well as cell-mediated immune response against pathogens. Now what is humoral and what is cell-mediated immune response? ये दो तरीके के immune response generate करती है body based on what type of antibody it is, and if it is an inactivated form or activated form, or how effective the vaccine is. So based on all of these factors, the body can generate two types of immune response. One is humoral and second is cell mediated. Now what is humoral and what is cell mediated? See, when
the vaccine can activate the B cells. B cells जब activate करती है वैक्सीन, so B cells in turn एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती है और फिर एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड करके उसे इसका डिस्ट्रक्शन करता है या उसे कॉम्बैट करता है, उस प्रोसेस को हम ह्यूमरल बोलते हैं। सेल मीडिएटेड में क्या होता है, टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं डायरेक्टली और टी सेल्स डायरेक्टली उस पैथोजन को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। पूरा जो बी सेल वाला प्रोसीजर होता है वो करने की जगह सेल मीडिएटेड टी सेल एक्टिव होने की वजह से टी सेल डायरेक्टली उसको पैथोजन को किल कर देते हैं। सो दैट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, the difference is clear between these type of immune response. Now, type of antigens used in vaccines. What are the type of antigens which can be used in vaccines, or what are the types of vaccines for that matter? See, whole pathogens, होल पैथोजन्स यूज किए जा सकते हैं। होल पैथोजन मतलब होता है कंप्लीट एंटीजन को यूज किया जा सकता है। कंप्लीट एंटीजन को लाइव फॉर्म में यूज करा जा सकता है, उसका एक्टिव फॉर्म में, और इनएक्टिवेट करके भी उसे यूज किया जा सकता है। सो दीज मेक्स टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सेकेंड इज प्योरिफाइड कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि हम पूरा का पूरा एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराएं इनटू द वैक्सीन। So sometimes what happens is purified components, एक particular component जो एंटीजेनिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए इनफ होता है, उसे भी वैक्सीन के अंदर उससे वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है। तो प्योरिफाइड कंपोनेंट्स कैन बी इट कैन बी टॉक्सॉइड, इट कैन बी प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ऑल्सो। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट लिया एंटीजन का और उसको फिर हमने ऑल्टर करके हमने उसको हमारे ईस्ट में या कोई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा के हमने अगर उसे इंट्रोड्यूस कराया, रिकॉम्बिनेंट यानी कि जब हमने कोई ऑल्टरेशन किया उस पर्टिकुलर प्रोटीन में, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड्स, जो एंटीजन का डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जीनोम जो होता है, उसे हमने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाया वैक्सीन के थ्रू, तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वैक्सीन। एंड वायरल वैक्टर्स, जहां पर हम वायरसेस को यूज करेंगे, हमारा पर्टिकुलर एंटीजन को एंटीजन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू वायरसेस एंड देन वायरसेस को हम यूज करेंगे टू इन्फेक्ट द। तो वायरल वैक्टर्स बेसिकली वैक्टर्स का काम करते हैं टू मीडिएट द प्रोसेस। ओके, now, what are the type of vaccines? Based on what type of antigen we are using, there are types of vaccines. First is whole organism vaccines. Now, this can be live and inactivated or attenuated form. So, whole organism vaccines is first. Second is purified antigen subunit vaccines, where we are using a particular component from the antigen to create a vaccine. डीएनए वैक्सीन, जहां पर हम न्यूक्लिक एसिड, उसका जो जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उससे यूज करेंगे। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, जहां पे मैंने आपको बताया वेक्टर यूज करके वी ऑल्टर द protein and we try to manufacture the recombinant form of that vaccine. Now we are going to study each type one by one. So starting with whole organisms vaccine. See, whole organism vaccine दो तरीके की हो सकती है. One is live but attenuated, and second is inactivated, right? Now live but attenuated के अंदर क्या होता है? Live but attenuated vaccines एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को अटेन्यूएट करके यानी कि ऑल्टर करके बनाई जाती है। हम उस पर्टिकुलर पैथोजन को अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो कराते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो कराने की वजह से उसके जीन में म्यूटेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी पैथोजेनिसिटी है वो लूज हो जाती है। वंस पैथोजेनिसिटी इज नो मोर विद द एंटीजन, वो एंटीजन के पास ट्रांजिएंट ग्रोथ की कैपेसिटी होती है, बट इट लूजेस द कैपेसिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी, उसकी कैपेसिटी वो लूज कर देता है, एबिलिटी लूज कर देता है। लेकिन जो ट्रांजिएंट ग्रोथ की एबिलिटी है वो उसमें तभी भी होती है। तो उस पर्टिकुलर एंटीजन अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स आर दोज वैक्सीन्स जहां पर हम एक पर्टिकुलर एंटीजन को अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करा के जब उनकी पैथोजेनिसिटी लूज हो जाए उस टाइम पे हम उसे वैक्सीन्स में वैक्सीन फॉर्म में क्रिएट करके हम इंट्रोड्यूस करते हैं। दीज आर लाइव बट अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। इनका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं।
See, due to their capacity for transient growth, these vaccines show prolonged immunogenicity and it eliminates the need for repeated boosters because एज आई टोल्ड यू कि उसकी ट्रांजिएंट ग्रोथ की कैपेसिटी होती है तो प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करती है लेकिन रिपीटेड बूस्टर्स नहीं चाहिए होते हैं इस वजह से तो दिस इज वन एडवांटेज लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है बिकॉज द वी हैव यूज्ड द होल ऑर्गेनिज्म इट स्टिल हैज सम associated risk of reverting back to its virulent form. ठीक है तो वो एंटीजन अगर वेरिएंट फॉर्म में आ गया तो इट कैन बी अ ड्रॉबैक ऑफ दिस वैक्सीन सो इसीलिए ये ड्रॉबैक है इस वैक्सीन का हाउएवर आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गए हैं जहां पर उस विरुलेंट जीन को ही निकाल दिया जाता है उस पर्टिकुलर एंटीजन से और विरुलेंट जीन को निकालने के बाद फिर उसका वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसकी वजह से वो वैक्सीन सेव रहती है मूविंग फॉरवर्ड the second type is inactivated or killed vaccines now what is inactivated or killed vaccines उसमें हम क्या करते हैं inactivation of pathogenic organisms by heat or chemical treatment so that organisms are unable to multiply in the host ठीक है they are treated with either heat or chemical treatment ताकि वो multiply ना हो पाए inactivation is generally carried out in such a way so that the structure of epitopes on surface antigens remain maintained or intact उसका जो एपिटोप का जो स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस पे जो एपिटोप का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज ना हो वो डिफर ना करे उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हीट ट्रीटमेंट जनरली नहीं दिया जाता है दिस इज अ पॉसिबल वे हीट ट्रीटमेंट का लेकिन जनरली हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि उससे प्रोटीन डिग्रेडेशन होने के चांसेस रहते हैं एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन के वजह से मे बी हो सकता है एपिटॉप्स मेंटेन ना रहे इस वजह से ये ट्रीटमेंट जनरली यूज नहीं किया जाता केमिकल ट्रीटमेंट यूज किया जाता है केमिकल इनएक्टिवेशन यूज किया जाता है जहां पर उस पैथोजन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है जिस वजह से उनकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो लूज हो जाती है बट सॉरी नॉट इम्यूनिटी पैथोजेनिसिटी जो है वो लूज हो जाती है एंड देन दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दी they can be developed into the vaccines which can be used to immunize people now इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स इफेक्टिव होती हैं लेकिन लेस इम्यूनोजेनिक होती हैं बिकॉज उसमें हमने इनएक्टिव पैथोजन यूज किया है सो लेस इम्यूनोजेनिक होती हैं बहुत ज्यादा बूस्टर्स की जरूरत पड़ती है सेकेंड टाइप ऑफ वैक्सीन में एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती इट प्रोवाइड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी ओके सीक्रेटरी आईजीए प्रोडक्शन नहीं होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर सीक्रेटरी आईजीए प्रोडक्शन नहीं होता है वेयर एज फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ा लाइव बट अटेन्यूएटेड वैक्सीन उसके अंदर आईजीए प्रोडक्शन होता है दैट प्रोड्यूसेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड दैट्स वेरी इम्यूनोजेनिक इन नेचर बहुत एडवांटेजियस है वो वाले वैक्सीन जो होल ऑर्गेनिज्म का जो लाइव बट अटेन्यूएटेड वैक्सीन है बट इनएक्टिवेटेड बिकॉज वी आर यूजिंग द इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन और एंटीजन वो जनरली लेस इम्यूनोजेनिक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं परफॉर्म कर सकती सेल मीडिएटेड नहीं स्टिमुलेट करती एंड आईजीए प्रोडक्शन नहीं हो पाता इस वजह से सो दैट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वैक्सीन if we compare these two vaccines booster dose ज्यादा आपको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर जो इनएक्टिवेटेड सेकंड टाइप है उसके अंदर बूस्टर डोज ज्यादा लेने पड़ते हैं अटेन्यूएटेड वैक्सीन में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती बूस्टर डोज की स्टेबिलिटी देखी जाए तो इनएक्टिवेटेड ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इसमें चांसेस नहीं होते कि वो विरुलेंट फॉर्म में फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है ऐसा चांस कोई नहीं होता बिकॉज दैट इज अ इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन तो वो चांस नहीं होता इम्यूनिटी अगर हम देखें तो अटेन्यूएटेड कैन इंड्यूस बोथ टाइप ऑफ इम्यूनिटी ह्यूमरल भी और सेल मीडिएटेड भी तो काफी इम्यूनोजेनिक है वो एंड इनएक्टिवेटेड जो है वो ओनली ह्यूमरल ही जनरेट करती है रिवर्जन टू विरुलेंट फॉर्म मैंने आपको बताया अटेन्यूएटेड कैन बी रिवर्ट बैक और ये वाला इनएक्टिवेटेड है तो इट कैन नॉट हैपन इन दिस
So this I have explained already, live but attenuated, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि it contain live organ microbes which are weakened, so they do not cause the disease. It replicates very strongly in the host, provides long-lasting immunity. Example of this type of vaccine is MMR, measles के लिए, mumps के लिए, rubella. So इसके लिए जो वैक्सीन यूज होती है MMR, वो BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होती है, एंड ओरल पोलियो वैक्सीन OPV. रिस्क मैंने आपको इसका बता ही दिया है. Disadvantage: inactivated, I have already explained. It contains pathogens that have killed by heat or chemicals, cannot replicate in host. So safer, but it may require several boosters. इसके examples अगर हम देखें, so inactivated polio vaccine is one such example. Hepatitis A vaccine and rabies vaccine. Some of the examples of this type. Now, moving forward, purified antigen vaccines, subunit vaccines भी इसको बोलते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ कंपोनेंट्स हम पैथोजेनिक माइक्रोब्स के यूज करते हैं टू जनरेट दी वैक्सीन, टू डेवलप दी वैक्सीन. पूरे माइक्रोब की जगह वी यूज स्पेसिफिक प्योरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. So इसके साथ see many of the risks are associated with attenuated or killed whole organism vaccines. मैंने आपको बताया virulence उसमें ज़्यादा होता है, and it can retain back its original to its original form. So इस strategy के साथ that can be avoided. अगर सब unit vaccine use कर रहे हो, it is effective, but and also the risk of you know getting back to its virulent form, all of these risks can be avoided simultaneously. This is a very effective vaccine. These type of vaccines, there are three types of subunit vaccines. See, it is safer, it has less side effects because it has just a component of the pathogen. Use only essential antigens from the pathogen, and it may require adjuvants. See, we are using a very specific component of the antigen, right, pathogen. So it requires adjuvants. Adjuvants are additional components or additional boosters or something which accompanies this vaccine to generate the immune response. So examples are hepatitis B vaccine and HPV vaccine. And as I said, there are types of purified antigen vaccines. What are they? So first is toxoid vaccine, second is capsular polysaccharide, and third is recombinant antigens. We will go one by one. Toxoid antigens, toxoid vaccines क्या होता है? See, जब एक्सोटॉक्सिन्स जो पार्ट होता है, एक्सोटॉक्सिन्स को केमिकली मॉडिफाई करके इस तरीके से केमिकली मॉडिफाई करके कि उनका जो एंटीजेनिसिटी है वो रहे, बट वो टॉक्सिसिटी जो है वो खत्म हो जाए, तब उस पार्ट को जब यूज करके वैक्सीन जनरेट की जाती है, उसे हम टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं, बिकॉज हम उसमें एंडोटॉक्सिन यूज कर रहे हैं. हम एंडोटॉक्सिन को केमिकल ट्रीटमेंट देंगे, केमिकल ट्रीटमेंट देने की वजह से उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाएगी एंड एंटीजेनिसिटी वो रहनी चाहिए. तो उस तरीके से उसे टॉक्सॉइड बनाया जाता है, टॉक्सॉइड वैक्सीन बनाई जाती हैं. सी, टॉक्सॉइड वैक्सीन उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती एज द ओरिजिनल एक्सोटॉक्सिन, बिकॉज हमने केमिकली ट्रीटमेंट करा दिया है एक्सोटॉक्सिन का, तो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी, बट दे कैन बी गिवन सेफली in high doses. It is required that you give it in high doses. Generally, 1 or 2 doses will not be sufficed for this particular vaccine. Diphtheria and tetanus vaccines are examples of this type, toxoid vaccines. Moving forward to capsular polysaccharide. So some subunit vaccines, especially these types of vaccines, capsular polysaccharide vaccines, इनकी एक limitation होती है. They cannot इनएक्टिवेट. कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड में आप उनका पॉलीसेकेराइड वाला जो पार्ट होता है उससे वैक्सीन बनाओगे, बट इनकी एक लिमिटेशन है दैट दे कैन नॉट एक्टिवेट द थाइमस सेल्स, लाइक टीएच सेल्स जो होते हैं उसको वो एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं. तो वो क्या करते हैं, बी सेल को एक्टिवेट करते हैं इन अ थाइमस इंडिपेंडेंट टाइप में, बिकॉज दे कैन नॉट एक्टिवेट द टीएच सेल्स. तो वो बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं इम्यून
रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए विच बिल्ड्स और विच रिजल्ट्स इन आईजीएम प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आईजीएम प्रोड्यूस होती है, लेकिन बहुत ही कम स्विचिंग होती है, एफिनिटी मैच्योरेशन काफी कम है इस एंजाइम का, एंड मेमोरी सेल्स बहुत ही कम डेवलप होते हैं। मेमोरी सेल्स कभी भी जब भी कोई वैक्सीन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दी जाती है, सो इट इज डेफिनेटली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी सेल्स, बिकॉज कोई भी वैक्सीन उतनी इफेक्टिव तभी होगी जब वो डेवलप मेमोरी सेल्स को डेवलप अच्छे से इफेक्टिवली कर पाए। So it has very less ability of affinity maturation and development of memory cells. However, vaccines that conjugate a polysaccharide antigen to a protein carrier can alleviate this problem. लेकिन हम इस तरीके अब कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड को अच्छे फॉर्म में बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ प्रोटीन कैरियर को यूज कर सकते हैं पॉलीसेकेराइड के साथ, सो दैट विल एलिविएट दिस प्रॉब्लम, विल रिड्यूस दिस प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट, बट विल नॉट फुली कोप अप विद द प्रॉब्लम। ओके, तो उस तरीके से इट कैन हेल्प इन द प्रोसेस जब हम वैक्सीन्स को जो polysaccharides है, polysaccharides के साथ if we use a protein carrier, we conjugate the vaccines to the protein carrier, that can help in the process. Okay, conjugate वैक्सीन क्या होता है, जब हम एक पुअर एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कोवेलेंटली लिंक कर देते हैं, पुअर एंटीजन स्ट्रॉन्ग एंटीजन मिल जाते हैं, तो इट स्टिल गेट दिस स्ट्रॉन्ग like ability of stronger immunological response to the poor antigen. दैट इज अ कॉन्जुगेट वैक्सीन, जहां पर हम एक कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड को प्रोटीन कैरियर के साथ हम कॉन्जुगेट करा देंगे, लिंक करा देंगे कोवेलेंटली, एंड दैट्स हाउ it is going to be a effective vaccine. Okay, moving forward to the third type, which is recombinant type or recombinant antigens. See, एक सब यूनिट वैक्सीन को बनाने के दो तरीके होते हैं. First method involves isolation of specific purified macromolecules from pathogens and administering this as vaccine. हमने particular एक एंटीजन लिया, पर्टिकुलर पार्ट लिया एंटीजन का, और हमने उसे एक वैक्सीन की तरह इंट्रोड्यूस करवाया. सेकेंड मेथड होता है ऑफ मेकिंग अ सब यूनिट वैक्सीन, which like it involves cloning a gene encoding any immunogenic protein. जो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन को जो जीन्स कोड कर रहे हैं, उन जीन्स को हम क्लोन करेंगे, एक सेम जीन बनेगा, उसे हम एक्सप्रेस करवाएंगे इनटू बैक्टीरियल, ईस्ट और मेमिलियन सेल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके, और उस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ जीन्स आएंगे, you know, the encoding surface antigen from viral, bacterial और protozoan pathogens, उसे फिर सक्सेसफुली क्लोन करके सेल्यूलर एक्सप्रेशन सिस्टम्स में वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ दिस वैक्सीन इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. क्रॉनिक डिजीजेस के लिए जनरली ये टाइप ऑफ वैक्सीन यूज किए जाते हैं. So hepatitis is very chronic in nature. So इस इन तरीके के diseases के लिए generally use किया जाता है. I'll explain the process once again. कोई भी particular पैथोजन का हमने जीन लिया, जो उस एंटीजेनिक प्रोटीन को कोड कर रहा है, उस जीन को हमने क्लोनिंग किया. क्लोनिंग करने के बाद वी विल एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर जीन इन ईस्ट सेल हो गया, मेमिलियन सेल हो गया, नॉट वेक्टर्स बट सेल में हम उसे एक्सप्रेस करवाएंगे. ईस्ट सेल हो गया, मेमिलियन सेल हुआ, recombinant DNA technology करके. So a number of genes encoding surface antigens from viral, bacterial and protozoan pathogens, उसको फिर further cellular expression system में encode किया जाता है, and once they are properly encoded, उसे vaccine development के लिए use किया जाता है. So this is the method of recombinant antigens, and it is a very widely used method, but it is generally used for chronic diseases. And these type of vaccines definitely gives the humoral response. लेकिन इसमें जो एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं, जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, वो एमएचसी क्लास सेकेंड पाथवे यूज करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने का. व्हाट आर एमएचसी लाइक, if you know about MHC class first and MHC class second, there are two pathways to generate the immune response for adaptive immune response. See, MHC class
first molecules found on all nucleated cells, सारे nucleated cells में वो मिलते हैं, and they primarily display antigens derived from intracellular pathogens like viruses. जो भी intracellular pathogens होते हैं उनके एंटीजन को वो प्रेजेंट करते हैं टू CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक सेल्स. जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ना, CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उनको वो प्रेजेंट करते हैं. सी MHC system is a very complex system to understand, but I am just giving you a overview. I'll make a separate video on this, but there are two types of main two types of MHCs, first and second. There is third type as well, but mainly two types. So first class में क्या होता है, सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में होते हैं ये. इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस को दे डिस्प्ले, जैसे कि वायरसेस हो गए. अभी ये डिस्प्ले किसको करते हैं, टी सेल्स को करते हैं. विच टाइप ऑफ सी टी सेल्स, CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं वहां पर ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं. MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो APCs एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मैक्रोफाजेस हुआ, डेंड्राइटिक सेल्स हुआ, एंड दे प्रेजेंट एंटीजन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस. जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर इज जो सेल के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट में है और जो इंट्रा क्रोमोसोमल पार्ट में है, that is the difference between intracellular and extracellular. And MHC class second displays these type of antigens to CD4 helper T cells. Okay, MHC class first सारे न्यूक्लिएटेड सेल में मिलता है. MHC क्लास सेकेंड सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल्स यहाँ मिलता है. MHC क्लास फर्स्ट का एंटीजन सोर्स क्या है, इट प्राइमरीली presents peptides derived from intracellular pathogens, और MHC class second extracellular pathogens. What are the function, टी सेल इंटरेक्शन अगर हम देखें तो MHC क्लास फर्स्ट का CD8 प्लस टी सेल्स है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और MHC क्लास सेकंड का देखें तो दे डिस्प्लेज इट टू CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ टी सेल्स. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन. एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट द फर्स्ट टाइप MHC क्लास फर्स्ट triggers cell mediated immunity, and the second type MHC class second mediates the humoral type of response, immune response. Okay, so that is about MHC class first and MHC class second. Moving forward to methods for subunit vaccine development, this I have already covered. There are two methods, isolation and purification of antigens directly from the pathogen, or you can use the genetic recombinant method where you are genetically engineered, like when you will be genetically engineering the antigen in a different host. DNA vaccines, डीएनए वैक्सीन्स को हम जेनेटिक वैक्सीन्स भी बोलते हैं. यहाँ एज इज वेरी क्लियर बाय द नेम, डीएनए वैक्सीन्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है पैथोजन का, वही इंडिविजुअल को इम्यूनाइज करने के लिए हेल्प किया जाता है. तो इस क्लास ऑफ वैक्सीन में क्या करते हैं, जो पैथोजन का जो जीनोम होता है उसका एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जो एंटीजेनिक प्रोटीन को एनकोड कर रहा है, वो हम डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जहां पर वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जो है क्रोमोसोमल डीएनए में जाकर इंटीग्रेट कर लेता है अपने आप को, या फिर एपिसोम की तरह सेल सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो. एंड दैट्स हाउ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स विद इन द होस्ट जनरेट फॉर फॉरेन प्रोटीन्स टू विच द होस्ट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स. दैट इज हाउ डीएनए वैक्सीन्स वर्क. ओके, डीएनए खुद इम्यूनोजेनिक नहीं होता, लेकिन उससे जो वैक्सीन बनती है, जो हम एंटीजन एनकोडिंग प्रोटीन को पहले निकालेंगे डीएनए वैक्सीन से एंटीजन एनकोडिंग प्रोटीन को निकाला और फिर डायरेक्टली हम होस्ट सेल को इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन बना के. ऑफ कोर्स वैक्सीन बनाई उससे, एंड देन वी इंट्रोड्यूस दी वैक्सीन टू दी होस्ट. होस्ट के जैसे ही हमने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाए, वैसे ही होस्ट सेल के क्रोमोसोम में वो जाकर क्रोमोसोमल डीएनए में जाके वो इंटीग्रेट करता है या एपिसोम की तरह एग्जिस्ट करता है, और दैट्स हाउ एक्सप्रेशन ऑफ द जीन विद इन द होस्ट जनरेट फॉरेन प्रोटीन्स, जिसके वजह से होस्ट जो है वो इम्यूनिटी अक्वायर कर लेता है. दैट्स हाउ डीएनए वैक्सीन्स वर्क. They can stimulate both types, humoral and cell-mediated immunity. Very effective they are. Zycov-D, India's COVID-19 vaccine, if you know, that is a DNA vaccine. Okay. See, these vaccines are stable, very easy to produce. You just have to
take out the antigen encoding proteins or genes, and then you have to make it into a vaccine. So it is very easy. लेकिन इसकी डिलीवरी जो है वो चैलेंजिंग हो सकती है, because you have to first make it to a vaccine, and then it needs to be delivered correctly so that it integrates into the chromosomal DNA. So its delivery can be challenging up to some extent, but it is a stable vaccine. Okay. Now, moving forward to the last type of vaccines, recombinant vector vaccines. I think you all are aware by this part, because recombinant vector vaccines are, very general term which is used everywhere, I think, in terms of vaccines. तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स में क्या होता है, जीन्स जो एंटीजन को कोड कर रहे हैं वो पैथोजन से आइसोलेट किए जाते हैं. वी इंट्रोड्यूस इट इनटू अ वेक्टर. वेक्टर कैन बी नॉन वेरिएंट वायरसेस और बैक्टीरिया, एंड देन दे आर यूज्ड एज वेक्टर टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट to replicate within the host and express the gene product of the pathogen encoded antigenic proteins. तो ये ये recombinant DNA vaccines का काम होता है. We take out the antigen encoding protein, we introduce into a host, then it can be a non-virulent viruses or bacteria. Then they are you know they are required to express the gene product of the pathogen encoded antigenic protein, which is developed into a vaccine. Then they are introduced into a host cell. Okay. इसका एग्जाम्पल है जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन. इबोला वैक्सीन जो इबोला वायरस के लिए बनी थी, that was also a recombinant vector vaccines. It can mimic natural infection, strong immune response. Strong immune response provide करती है and बिल्कुल natural infection mimic करती है. Like naturally जैसे वायरस इन्फेक्ट करेगा या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करेगा, उसी को प्रोसेस को ये मिमिक करती है. So it is a very stable and very strong vaccine for that matter. Okay. So this is the last topic which I have included. What is herd immunity? See, when in a certain type, like section of population, जहाँ पर आधे लोग या आधी से ज्यादा लोग, majority of the people are immune to a disease, so automatically the disease will not infect a lot of people in that in that herd or in that population. Why? Because आधी से ज्यादा लोग ऑलरेडी इम्यून हैं पर्टिकुलर डिजीज के लिए. अगर आधे से ज्यादा लोग इम्यून हैं तो इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. ओके. सो उस वजह से चांसेस काफी कम हो जाते हैं. सो इफ सी इन सर्टेन एरियाज, अगर मेजोरिटी ऑफ द एरियाज में वैक्सीन हो गई है या मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को दे दी है, सो इट automatically reduces the number of people and the chances of infection, because herd immunity हो जाती है. certain people are immune to the disease, they will not transfer the disease, तो वो rate जो है वो कम हो जाती है. It occurs when a large portion of the population becomes immune to a disease. It reduces the spread of disease, as I said, and protects those who are not immune. Achieved through vaccination of previous infections. प्रीवियस इन्फेक्शन, अगर प्रीवियसली किसी को इन्फेक्ट किया है उस डिजीज में, तो भी वो इम्यून हो जाता है अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड. वैक्सीनेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है. हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड डिपेंड्स ऑन द डिजीज रिप्रोडक्शन नंबर. See, it definitely depends on the disease's reproduction number. If it has like very high reproduction number, then it is not going to be the case. The herd immunity is not going to be useful for that particular disease. Lekin it is the concept for some disease, like it can be a viable concept for some particular diseases. Okay. Crucial for protecting immunocompromised individuals and infants. What is the efficacy of this particular type? See, certain people are immunocompromised. They are not capable of taking up vaccines, क्योंकि उनका जो immune system है वो already compromised है. They are taking up medicines so that the immune system does not generate a response. उस वजह से उन लोगों को वैक्सीन नहीं दिए जाते हैं. सो हर्ड इम्यूनिटी इज अ वेरी वायबल और क्रूशियल कॉन्सेप्ट फॉर देम. इन्फेंट्स के लिए भी सर्टेन वैक्सीन आर नॉट prompt for giving it to infants or neonates. So वहाँ पे भी herd immunity is a very crucial concept. Okay, that's about vaccines. I hope you like this video helped you.
If you have any particular doubt on, you can definitely comment down below in the comment section. I will reply to each and every one of you. Also, if you want any particular topic of your choice for me to explain, please do comment down below in the comment section. I will make a video on that for sure. Thank you so much for tuning in. Please do like, comment, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for now. Bye bye. Take care.